we'll be doing this numeric questions given here. This one, if 1 mole of carbon atom weighs 12 grams, what is the mass of 1 atom carbon? ठीक है, अब 1 mole of carbon atom का mass तो है 12 grams. ठीक है, अब we know that in 1 mole carbon atom, how many atoms will be there? 6.022 into 10 to the power 23 atoms. Okay, now and it is given that 1 mole of carbon atom mass equals to 12 grams. So मतलब 1 मोल कार्बन एटम में ये भी है और ये भी है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. ओके, सो दिस एंड दिस बोथ विल बी इक्वल. ठीक है, तो 12 ग्राम of 1 mass is equal to 6.022 into 10 to the power 23 atoms. मतलब 6.022 into 10 to the power 23 atoms का क्या मास क्या है? 12 ग्राम्स. तो हमको 1 एटम का मास निकालना है. तो इतने एटम्स का मास 12 ग्राम्स है, तो 1 एटम मास विल बी इक्वल टू 12 upon 6.022 into 10 to the power 23. When you will divide 12 by this, you will get 1.993, और 1 upon 10 to the power 23 will be 10 to the power minus 23 grams. तो ये आंसर होगा. ओके, दिस विल बी द मास ऑफ 1 atom of carbon. You can copy this solution. Okay. इनको डिवाइड करना है. 12 डिवाइड बाय 6.022. तो 12 को जब 6.022 से डिवाइड करोगे, ये ऐसे होगा, ये हो जाएगा 12,000. 12,000 को 6.022 से डिवाइड करना है. तो जब ये डिवाइड करोगे, इट विल बी 12,000 डिवाइड बाय 6.022. फर्स्ट इट विल बी 1. So sorry, 6,022. 6022. 1 times it will be 6022. 8 7 9 5 decimal, then 0. It will be 9 times 9 times, and this way you have to continue. So it will be 6022 into 9, that is equal to 54198. So minus 59780. This will be equal to 55820. Again 9 times 54198. This will be 902. Again 0. So it will be okay. It is 1 minute. Some mistake is there. 55820 minus 54198. That is equal to 16220. So this way you will get the answer 1.99. Approximate 3 will come. Actually 2 will come and then 9 or 8 will come. So you will get 1.993 this way. Is it clear? Yes, ma'am. So this is the answer. Copy this, everybody, those who have not. Which has more number of atoms, 100 grams of sodium or 100 grams of iron. Okay, so this question we are going to do this way. Okay, number of atoms we have to find. Okay, so n equals to small m upon capital M, and that is equal to n by n0. Okay, अब हमको मास
suppose first of all we are doing for sodium. So small m for sodium is 23 given. Okay. So small m for sodium is given 100 grams. दोनों के लिए 100 grams ही दिया है. Capital M for sodium is 23 G. N we have to find, and N0 की value fix है 6.022 into 10 to the power 23. Okay. So it is N equals to 6.022 into 10 to the power 23. Now we'll not use this, we'll just use this relation m by m equals to n by n0. ठीक है. तो m है 100, कैपिटल m है 23, n हमको फाइंड करना है और n0 है 6.022 into 10 to the power 23. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n will be equal to 6.022 into 10 to the power 23 upon 100. Oh sorry, into 100 upon 23. This we have to evaluate. तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करना होगा. ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू 2.62 into 10 to the power 24 atoms. This will be the result. Because इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा. एक 0, what we are going to do is we are making this one of the 0 will be taking this way 10 to the power 24 हो जाएगा और एक यहाँ पे ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और इसको डिवाइड कर लेंगे. ठीक है. So we'll get this. Okay, these are the number of atoms for sodium. Now for iron we have to calculate. So same procedure we'll be doing for iron. Okay. So for iron I am doing here. N equals to m upon m equals to n by n0. M, small m for iron is also given 100 grams. Capital M for iron is 56. N0 is 6.022 into 10 to the power 23. तो ये हो जाएगा 100 upon 56 equals to n upon 6.022 into 10 to the power 23. Okay, so n will be equal to 100 into 6.022 into 10 to the power 23 upon 56. Okay, so this will be equal to 1.075 into 10 to the power 24. जब हम कैलकुलेशन करेंगे एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और एक उधर मल्टीप्लाई कर देंगे. लाइक दिस आई विल मेक 24 and this I will make 60 point this, and when we will divide this to this will get. Okay, so now which has more atoms? So iron के लिए 1.075 into 10 to the power 24 और सोडियम के लिए था 2.62. Okay, so sodium has more number of atoms. Answer will be sodium has more number of atoms. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to obtain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of compound by weight. ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या दिया है? मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ बोरोन. ऑक्सीजन इज गिवन 0.24, sorry, mass of oxygen is 0.096 grams. Oh, sorry, 0.144 grams of oxygen. Okay, then mass of boron is 0.096 grams. Total mass of compound is 0.24 grams. अब हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ बोरोन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो परसेंटेज ऑफ बोरोन इक्वल्स टू मास ऑफ बोरोन अपॉन टोटल मास इनटू 100%. ऐसे ही निकालते हैं. अगर हमको हमारी किसी भी क्लास के परसेंटेज निकालना है तो मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100. सिमिलरली अगर हमको सिर्फ बोरोन का परसेंटेज निकालना है तो
mass of boron upon total mass into 100%. Okay, so when we'll solve this this way, so 24, this will be 4 times, so it is 40%. ठीक है, ऑब्वियसली अगर एक 40% है तो दूसरा 60% होगा, क्योंकि ये दोनों ही कंपाउंड, ये दोनों ही एलिमेंट्स है कंपाउंड में, बट वी कैन फाइंड इट बाय सेम वे. Mass of oxygen is 0.144, total mass is 0.24. 1 minute, I'll write somewhere else actually. Yes. 1 minute, I am saying कि we are, एक सैंपल दिया है, उसमें टोटल मास दिया है हमको. टोटल मास ऑफ सैंपल है 0.24 ग्राम्स, ये टोटल मास है. इसमें ऑक्सीजन का मास इतना है और बोरोन का मास इतना है, हमको परसेंटेज निकालना है. तो परसेंटेज ऑफ बोरोन क्या होगा? मास ऑफ बोरोन अपॉन टोटल मास इनटू 100%. सिमिलरली मास ऑफ ऑक्सीजन आल्सो वी कैन फाइंड. मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी, ओ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन will be 1 minute. I am writing here, side में लिख रही हूँ. Percentage of oxygen equals to mass of oxygen upon total mass of sample into 100%. This and this cancel 0. So 24 6 that is equal to 60%. So this is the mass of oxygen, this is the percentage of oxygen, this is the percentage of boron. Once, ठीक है. When 3 grams of carbon is burned in 8 grams of oxygen, 11 grams of carbon dioxide is produced. Okay. Now, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 grams of carbon is burned with in 500 grams of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? So, first of all, this atoms always combine in definite proportion. Law of constant proportion से आंसर दे रहे हैं हम. ओके, सो आंसर लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन अगर 8 ग्राम, 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज कंबाइनिंग विथ 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके, देन इट इज फॉर्मिंग 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब हमको 3 ग्राम कार्बन दिया है लेकिन 50 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है. ठीक है, तो 3 ग्राम हमेशा 8 ग्राम के साथ ही कंबाइन होगा, इनका रेशो हमेशा ये फिक्स ही है. तो 42 grams of oxygen will remain unreacted and again 11 grams of carbon dioxide will only be formed. Okay, because 3 grams can combine with only 8 grams. Okay, so the answer is it will govern by law of constant proportion and again 11 grams of carbon dioxide will be formed because 42 grams of oxygen will remain unreacted. 42 grams of oxygen will remain unreacted. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now, question number 3. I am wrapping this. What are polyatomic ions? Give example. We have already seen polyatomic ions in the chapter and we have underlined the definition. Okay. So, write the chemical formula of following compound. This also we have done. Any doubt in question 3 or 4? We have done it once. Okay, I am writing the answer. अगर अभी तक नहीं लिखा है तो लिख लेना. MgCl2, this will be CaO, copper nitrate, CuNO3 whole twice. Do you know how these formulas will be formed? Yes, ma'am. We have already Yes, done it. Okay. And this will be CaCO3. So write these answers in your book also. Now, question number 5. Give the names of element present in following compound. ठीक है. Quicklime. क्विकलाइम एक्चुअली कॉमन नेम है, इसका नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मूला है CaO. ओके, एंड गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. इसमें एलिमेंट्स है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन.
Okay. Quicklime is common name. Okay. And calcium oxide is the standard name or IUPAC name. Okay. Now, next is hydrogen bromide. It is HBr. What are the elements present in HBr? Hydrogen and bromine. Baking powder, its common name is NaHCO3. The elements are sodium, hydrogen, carbon and oxygen. Okay. And baking powder is common name. जैसे किसी का कोई घर का नाम होता है, एक नाम होता है जो हम बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखवाते हैं, तो वो है IUPAC नेम. जैसा हमारा एक बर्थ सर्टिफिकेट में जो नाम है वो तो है IUPAC नेम. जो घर पे कोई कॉमन नेम है, दैट इज like some other, anybody can say, like different people can say by different name, but IUPAC name is standard name. तो इसका जो स्टैंडर्ड नेम है वो तो है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बट कॉमन नेम इज बेकिंग पाउडर ऑल्सो. Okay. Or it is present in baking powder basically. Next one is potassium sulfate, K2SO4. Elements present are potassium, sulfur and oxygen. Calculate. You have done? Okay. I have also done. Okay, so anyway, you can check your answers if you have done. Calculate the molar mass of following substance. I already told unit of molar mass is grams. ठीक है. अब इथाइलिन, sorry, इथाइन, 26 gram. Ethine is 26 grams. Okay. Sulfur molecule 256 grams. Okay. Phosphorus molecule 124 grams. 24. And HCl 36.5 gram. And nitric acid 63 grams. Okay. So you all know the method how to find this molar mass. Okay. Now question number 7. Okay. What is the mass of 1 mole of nitrogen atoms? Okay. So we have 14. Okay. Yes, right. 1 मोल दे रखा है और मास फाइंड करना है हमको, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे N equals to M upon M. Number of moles, okay, N is equal to 1 mole. Okay. Mass of nitrogen atom is 14 grams molar mass, and small m we have to find. So 1 equals to M upon 14 or M equals to 14 gram. This is the answer. ठीक है. Next one है 4 moles of aluminium atoms. 108 gram. 108. इसको चेक करना पड़ेगा तुम्हें. अच्छा ये ओके. 4 into 27. ठीक है राइट है. हाँ हाँ. N equals to 4. Then M equals to, we have to find, and capital M equals to 27. तो ये हो जाएगा N equals to M upon M, and that is equal to 4 equals to M we don't know upon 27. So M equals to 27 into 4. That is 7 4s are 28, 108 grams. Okay. Is it clear? इसके बाद यहाँ पे है. Okay, now third part, 10 moles of sodium sulfate. Okay, so C part, 7th C part, N equals to 10, 1260. Okay, capital M for Na2SO3, sodium sulfite होगा, sorry, 2 into sodium का weight है 23 plus sulfur 32 plus 3 into 16. तो ये हो जाएगा 126 grams. Okay. Now N equals to 1260 मैम. हाँ 1260 right. तो M upon 126. तो ये हो जाएगा M equals to 1260 grams. This will be the answer. Clear है? अपन पहले डायरेक्ट. 8th question,
number of n, small n is unknown. In A part, small m is 12 grams. And oxygen gas means O2. Okay, so m for O2 equals to 2 into 16, that is equal to 32. So n equals to m upon m. m है 12 और कैपिटल m है 32. 12 by 32, ये जब डिवाइड करोगे बेसिकली इट विल बी 6, 16, 3, 8. जब 3 को 8 से डिवाइड करेंगे 0 decimal point 8, 3s are 24, 16. 375. 7 8s are right. 56, 40, 5, 8s are 40. So that will be equal to 0.375. Okay. Then second part, 20 grams of water. Small m equals to 20 grams. And 1.1. M 1. for H2O equals to 1 into 2 plus 16, that is equal to 18. So n equals to m upon m, that is equal to 20 upon 18, that is equal to 1.1. Okay. Then C, 22 grams of carbon dioxide. Okay. So m equals to 22 grams. And m for carbon dioxide will be m for CO2, that is equal to carbon is 12, oxygen 16 into 2. So 16 2s are 32, 12 plus 32 is 44. So n equals to m upon m, that is equal to 22 by 44, that is equal to 0.5 mole. Okay. So these are the three answers. This one, and this one. These are the three parts. Okay. Now, what about question number 9th? Have you finished 9th one also? What is the Yes, mass of? ma'am. Okay. Mass of 0.2 mole of oxygen atom. Okay, let us do this 9th question, last question for today. N equals to 0.2. A part में क्या दे रखा है? 0.2. इसमें हमको find क्या करना है? M. ठीक है. For oxygen, M for oxygen अभी हमने find किया था. M for O2 होता है. It is 32. तो अब हमको m फाइंड करना है. n इक्वल्स टू m अपॉन m. 3.2 ग्राम. तो ये हो जाएगा 0.2 इक्वल्स टू m अपॉन 16. 1 मिनट. सॉरी, ये ऑक्सीजन एटम है, गैस नहीं है, तो ये 16 ही रहेगा. ठीक है. m फॉर ऑक्सीजन एटम. तो इसमें O2 गैस में क्या होता है? O2 मॉलिक्यूल और गैस, इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. खाली ऑक्सीजन एटम होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. ओके. सो m विल बी इक्वल टू 16 into 0.2, दैट इज इक्वल टू 3.2 ग्राम्स. 9th A का आंसर होगा 3.2 ग्राम्स. ठीक है. अब नेक्स्ट है फॉर वाटर मॉलिक्यूल. 9th H2O. ये राइट. तो n है 0.5 बी पार्ट में, और वाटर मॉल m फॉर H2O 18 हमने अभी फाइंड किया था ऊपर. ओके, दैट विल बी 18 ग्राम्स. तो 0.5 इक्वल्स टू m अपॉन 18. तो m विल बी इक्वल टू 9 ग्राम्स. दिस विल बी द आंसर फॉर पार्ट बी. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, is it clear to everybody? Yes. Okay. Yes. So ma'am. copy